Yes, sir. Yes, sir, audible. Very good. Okay. Am I visible? Let me know. Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Yes, sir. এটা আমার আসল। Today we'll start study a new topic, a new subject, that is ecology and environment. Those who might have studied, you can repeat that one. And since it is mostly the new batches are there, so we have to forward that one. Light गुड़ा लगी देर से पूरा अंधार दिखा होचे. तो मैं सब लगे थे. Geography लिखा है क्या जी? ठीक है, पढ़ दे. Next class देखिए. जो ने repeat करते ठीक है, you can do or it's your choice. है ना? हिंदी किसी ने. है ना? We'll start for ecology and environment. Okay, ecology and environment. Suppose inside it comes under particularly. है ना? Before that one, let me know. तो बैच रे इतने बिलास तो कौन है लिशु? Oh, वर्षा जोगो. My goodness, it's a future. That's a esteemed features of bureaucrats. Huh? Oh. And the वर्षा वाले भी office जीवन. That's good. Okay. So before that one, what is ecology? Let me know. What is ecology? It's a study of home of nature. Study of interaction between environment and living organism. Biotic and abiotic. Thank you, madam. Then what is environment? Which one is broader? Environment. Environment is broader. Which one? Environment is always a broader concept. Broader concept. है ना? लिखा. Ecology. लिखिए. Ecology is a term which is derived from word oikos, that means home or place to live. Oikos or place to live. Oikos. है ना? Logi means study first. Right. These are the Greek terminology. Basically, these are all the Greek terminology. Okay. Oikos means homes or place to live, and logi means it is study. ठीक है जी? लिखा है पूरा statement है. है ना? भला अभी notes हो बना. These are all which are more basically your concepts for or understanding facts. Both are that will help you in your prelims as well as mains also. है ना? तो सही point of view लिखा. Ecology is defined as is the study of interaction. It is defined as the study of interaction between study of interaction or relationship among better interaction or relationship among organisms and with the environments. Organisms, please underline, interaction among organisms and with their environment. ठीक है जी. प्रथम
ता तळे लिख स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रे तुमको हेल्प करियो प्रीलिम्स रे तळ तळ एमती एरो मार्क दे के लिखि चला देखो this study also depicts माने हला depicts माने सूचाए माने connotes माने जदि प्रीलिम्स माने सिनोनिम्स कहबी depicts रहला connotes or indicates जोटा तमे कहू हला these are the things depicts माने जहा connotes माने सेया and indicates माने सेया हला prelims is very dicey now वर्तमान ए इयर तमे देखिलो से जुगु निजर इंग्लिश रे इनरिच करो सेई एई वर्ड तमे जदि हठात न से पके देबो connotes जान नथियो हला माने हला द सेम थिंग ठीक अछि and do not take this exam lightly because since you all are writing as a civil service as exam this is very high profile exam for the country so you need to be a very sound level of English that will PG level hala nothing to you will go with the flow tame jani jo dhire dhire to lekha it depicts how the organisms use the environment resources it hala depicts how the organisms use the environment resources and the way they adjust to the environment and the way they adjust to the environment Please repeat. it depicts how the organisms use the environment resources and the way they adjust by their environment अच्छा मते एना को एनवायरनमेंट रिसोर्सेस माने कोन बुझछो नो सेठी लेखो साइड रे environment resources means energy flow and mineral cycling environment resources माने energy flow and minerals cycling we'll all study हम सब जिंस पढिबा हैला energy flow and mineral cycling पुणी लेख तापरे it consists of it consists of both biotic and abiotic components it consists of both biotic and abiotic components हैला biotic and abiotic components biotic माने living organisms abiotic माने non living organisms हैला stay here I will again come back वर्तमान लिखो environment what is environment broad sub heading दियो what is environment ठीक है लिखो everything that surrounds or affects organism everything that surrounds or affect their organisms everything that surrounds or affects organisms ठीक है organisms during their lifetime everything that surrounds or affects organisms during their lifetime ठीक है it incorporates माने incorporates है ना involve or includes whatever है ना incorporates माने जहाँ includes माने सैया है ना includes or involve माने सैया no induce हबनी कर परियो सुनो मु वर्डिंग्स ऊपर तुमको काहे ध्यान दोची एतका जो ए वर्ष प्रीलिम्स रो क्वेश्चंस तुम निजे देखो ठीक हैला सब परीक्षा जहां भी पढछो जो भी सब्जेक्ट पढछो I would suggest or I would advise please go through the question paper it will give you clarity अच्छा श्रावणी तो कहलु श्रावणी ना induce माने कोन मते कहला से जो कहला induce वाट तुम कोठी कहबे एनवायरनमेंट रे
How many of you are here are engineers here? Something I know. Physics engineers. So. Induce, इतर कोतरे electrical. Metallurgy. Follow. Induce effect टाइम में कोडी environment कौन कोई? What do you mean by the induce? Who can say? Add, react. No. Induce. Yes. Mane, it is because of something, it is induced. Mane, it is not directly involved, but indirectly it is the effect. Which is indirectly it is the cause and the effect is that one. Same thing, environmental induced effect hame kota koi pariyo. Think of it, I will say. Bhabhi ko mate kahibo. Environment re, amo environment am to banchuchu. Amo bhitar emti kota emti induced effect poduchu amo upare. Sunlight. How? Pollution. Hala? So suppose tomorrow question pakala ki pollution has an induced effect on the health parameters of the organisms. Absolutely correct. ठीक है जी? Okay. शब्द संग्रह खेलिवा सिखो तमनकर मेजर हैला शब्द ये शब्द ऊपर मास्टरी जहारा कमांड that will help you हैला ओके को बंद रखिले सिद्धार्थ हाँ it incorporates the living non-living components. It incorporates the living non-living components, influences and events comma दियो comma देबार माने influence कला and event माने किछ छोटे react करी कला place कला हैला comma that surrounds an organisms that surrounds an organism. ठीक है जी next लिखो the relationship and interaction between organism and environment. The relationship and interaction between next point right? The relationship and interaction between organisms and environment is highly complex. Again, I am repeating. The relationship and interaction between organism and environment is highly complex. The environment or our environment is not static. कौन पे? There is always a change. कौन change होची डिस्कस कब डाकिबी कौन change होची तमारे से गुडा what are those? Abiotic components changing खाली abiotic components change होची biotic भी component होची ता माने biotic को सब डाकिबी हैला biotic abiotic the both are changing and both are simultaneously affect each other. For example, suppose a question तुमको पचारला है ना suppose one question asks you in interview or in mains जो भी जिनसे तुमको पचारले कि how biotic components affect the abiotic components तत्ते काटी देवी धरी की पढ़ने की please tell in sentence vulture तत्ते taking नहीं जाओ नहीं vulture. See how you say that one? Because of the industrialization, it's an human-induced effect. Because of the industrialization, the temperature, global temperature increases abruptly. है vulture तो टिकी नहीं जानते vulture बुझे because of the industrialization which is human-induced है the temperature of global temperature increases abruptly है
Carbon dioxide. Yes. Okay, pollution. Carbon dioxide. Okay. तापर पुण लिखो. Very good. Next लगा तापरे. को पंत लिखला श्रावणी लास्ट टा. Is static. है ना? तापरे एटी लिखो. It is not static. है ना? Underline करो सेटी. Is not static. पुण सेट लिखो तापरे. Continue the statement. It consists of both living and non-living components. Living bracket रे biotic, non-living abiotic. है ना? Living it कौन कहूँ? Living, that is biotic, then it is non-living, that is abiotic. ठीक है जी? Abiotic components, comma, which keep changing continuously. Which keep changing continuously. है ना? बतन पुनी ब्रॉड कोटे सब हेडिंग दियो. Abiotic components. Abiotic components. This includes khara mane sorry, sunlight, tati. This includes sunlight, gravity. How kon hobo? Wind, precipitation. Water. Yes. Water. Water. Precipitation mane water mane precipitation mane water. Varsa. Yeah. Yes. So soil, Yes. Good. soil, Humidity, temperature, heat flow, topography, atmospheric gases, atmospheric gases, etc. ठीक है जी? है ना? Anything माने abiotic माने जोड़ा कि non living basically. है ना? बर्तमान पुनी ब्रॉड हेडिंग दियो biotic components. Basics fundamental we are studying today. है ना? Basic जिनसे बड़ा. It includes or it incorporates green and non-green plants, green and non-green plants, decomposers, parasites, parasite, animals, humans, symbionts. Humans. Symbionts. कौन माने? Etc. Mutual माने symbiotic relation mutual. Key example. lichen, Very good. सबुठु बड़ा जो example देला श्रावणी सेटा की माने most हला acceptable, that is ecology. कौन है? ये कोठी रही. stomach research, Intestine. Yes, very good. It lives in our digestive system, human digestive system, basically. कौन करे यार? Ecology. It comes from vitamin B12. Subhendu, very good. Protein को break down करे, है ना? Equally यदि not था, what would happen to us? breakdown ही परंपरा है ना? Difficult for digestion. अच्छा आउ के सेमती symbiotic relationship, let us know symbiotic relationship ऊपर धरा कोई question पकड़ला, let us have an discussion. Class रे मन दे की सुनो, it helps you more rather than writing.
हला सब गोटे जिनस मन रख सिविल सर्विस क्लास माने हमने लिखिबाटू सुनिबाटा बहुत जिनस इक्वली इंपोर्टेंट बट सुनी जिते जिनस तुम करूछ सपोज वर्तमान गोटे इश्यू आस्तिला सपोज मु कहली ओशियन ऊपर हला तुमको क्लू देली इज देयर एनी क्रिएचर that lives in ocean who maintains a symbiotic relationship? Well, तू तो नहीं घर नहीं पाल के आराम से Coral reef. Octopus. ऑक्टोपस The hermit crab. जोजान थिले सुनो जोजान थिले is particular and coral polyps हला which make an symbiotic relationship with the corals. It's a tiny हला जोजान थिले मु पढी भी तुमको हला हला जोजान थिले ठीक अछि जोजान थिले is an coral polyps. कोरल भितरे रहे सामुका भितर. It makes an symbiotic relationship with corals. बड़ छोटियाटे देखि जोजान थिले corals भितर ये रहे. It's a very tiny polyps छोटियाटे हला जोजान थिले. Cucumber. वेल एले माणी के रखी भी ताकू करे. Sea cucumber. Sea cucumber. Can you explain, madam, how it is? Sir, से cucumber shape रो गोटे sea माने sea creature. अच्छा हमर एटा पढ़ा हेतला स्कूल. स्कूल ले पढ़े वेरी गुड वेरी sea cucumber very nice बहुत बढ़िया. Rakesh lecture we are informing so many times but all of you are not listening disturbing us. Anything is happening there? I don't know. I would request everyone to please make silence or keep silence. एतिक समय पढ़ीवा मन दे की पढ़ीवा हैला ठीक अछि दीटा जानले कि हमें जानले कि ई कोली एंड जोजान थिले परीक्षा पचारी सारी चीज जहां भी करूछु सब नोट करनबो मैक्सिमम थिंग्स व्हिच हैव ऑलरेडी आस्क्ड और somehow it is in the paper or news something Sir, जोजान थिले श्रावणी अर्थवर्म यस अर्थवर्म वेरी सॉइल फर्टिलिटी में अर्थवर्म भी कहि परियो ठीक अछि अच्छा तापर लिख बायोटिक कंपोनेंट्स अच्छा ठीक अछि टिके मनोज माने टिके सेडी माने हल्का देकी कर मु खाली गोटे क्वेश्चन भूली गेली मन बजार तबे प्रथम लिखिलो इट इंक्लूड्स ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स व्हाट डज इट मीन सी डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि ओनली डाकी देबी और तमर खाता भरिबो तमे पळेबो unless until if you do not analyze that is not on civil service class very fast I am very clearly हमर ज्योग्राफी में होची आगु एटा ने भी डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी इनकॉर्पोरेट सब जिंस एनालिसिस जोठी नाही सिविल सर्विस मानर किछि मतलब नै बुझो कि नहीं so we participate in the discussion in the debate that what I am perpetuating in the class हला मते को green and non green plant विषय who can say that one what is the major difference one by one Ashish. Who can prepare their food by own? Main difference is chlorophyll, sir. Acha, chlorophyll is the main difference. Can you explain how? Sir, green plants having chlorophyll and they can make their own food by themselves. So, you mean to say that non-green plants are not making their own food? Both are chlorophylls. But why it is green and why it is non-green? It is, yes, Raman. Exactly, that's what I listened. Yes. See, the color green is mainly dependent on your quantum of your pigments, means I mean chlorophyll pigments. It is the chlorophyll pigments that is basically responsible for to making the plant as green or non-green. बुझे कि नहीं क्लोरोफिल पर जेमती फॉर एग्जांपल ह्यूमन रे होची ह्यूमन स्किन रे अछि कि नहीं which particular component is responsible for human color Melanin. हला मेलानिन जो कोन हुए हमरो either we are fair or black कम थिले fair yes very good हला बेसी थिले हमरो black sorry हमरो मेलानिन जदी थिबो बेसी थिले black कम थिले white. So melanin is good for health or not? Yeah, it's good. Good for health. As melanin is good for health. High melanin good for health.
high It melanin prevents cause death. no, good for health, because it prevents us from UV ray. High contents of melanin causes your skin disease basically. Sometimes more the melanin, it has Europe रे देखा है जहाँ जहाँ melanin बहुत अधिक अच्छी, that may leads to cause your skin cancer also. है ना? ठीक है? अच्छा. Next, लिखो. Biotic components are segregated into, meaning divided into two types. Segregated into two types. One is number one autotrophs. Second one is heterotrophs. Autotrophs and heterotrophs. Just 1 second. Set it as autotrophs and heterotrophs. It like a puni autotrophs. लिखी चला हला these are the basics fundamentals हला जोड़ा कि तमर usually agro food chain use होबो. They are the primary producers. Autotrophs are the primary producers. Please underline, autotrophs are the primary producers. ठीक है? Full stop. They prepare their own food. They prepare their own food. They prepare their own food. They are blessed with autotrophs. They are blessed with the natural ability. They are blessed with the natural ability to synthesize. Please underline, synthesize carbohydrates from water and CO2. To synthesize carbohydrate from water and CO2 in the presence of sunlight. Again, I'm repeating, to synthesize carbohydrates from water and CO2 in the presence of sunlight. Example, green plants, algae. Shravan, you are having botany, ne? Botany background, ne? Okay. ठीक है, you are repeating. That is most welcome. No problem. है ना? As per your choice. जो माने करिवो, you can repeat or else. जो माने नुआ अच्छा करिवो. है ना? जो माने नुआ बैच कहि देबो already it has started. Very important. Environment is also very important. Minimum 12 टा क्वेश्चन आछी. ठीक अछि? अच्छा मते can anyone say algae केमती खाइबा तरीका रे? बहुत algae माने कोन ओडिया रे मते बुझिलो. बहुत जणकर सॉय बाळा.
केमती से करे खाइबा तिए what is such a tiny means I mean plant ताको हम plant कहि परिबो microorganisms हम कहि we can say that one micro हला plants माने basically कौन they have the features थियो कौन root stem branches fruits these are the very common हला basics fundamentals सब clear रखो ठीक अछि but algae रे समथि किछि न थाय that is why it is microorganisms but we can say it has the small roots also very tiny roots ठीक अछि concept सब रखो clear next लिखो तापरे heterotrophs हला autotrophs गला then heterotrophs it likha heterotrophs are the consumers they are the consumers please underline they are the consumers right? It means they do not prepare their own food it means they do not prepare their own food they do not prepare their own food they consume either on plants they consume either on plants mane primary producers underline karo important it they consume either on plants mane primary producer or animals secondary producers or animals बुझियला ठीक अछि ता माने माने कोन परभुजी निजे माने निजे खाइबा तयारी करंतनी माने सबले डिपेंड करन हला पुन लेखो further heterotrophs are segregated into two parts into or two types heterotrophs are segregated into two types that is phagotrophs है phagotrophs देखो phagotrophs and this osmotrophs phagotrophs and osmotrophs dita put submitting the phagotrophs how you make it phagotrophs they derive their food माने digestion है ना food digestion कौन either by plants or animals or from both ठीक है जी अब रिपीट करछि they derive their food माने digestion either by plants or animals or from both they are also known as कौन phagotrophs माने they are also known as macro consumers I'll explain macro consumers but statement based question में पचार दो phagotrophs are known as your macro consumers है ना जानने थे यदि पूरा भूल statement based पकेबो लेखा पुनी further phagotrophs are classified as herbivores
bracket रे animals that feed on plants तृणभोजी जोड़ा कहते carnivores herbivores carnivores मैं लिखी दो चौथरा कौन हो है herbivores carnivores and omnivores ठीक अच्छे माने एटा हला they feed on plants particularly carnivores they feed on हला animals ठीक अच्छे plants एटा हला animals आउ एटा हला both हला both ऊपर 1 2 and 3 both 1 and 2 है तमन भितर एमती किए अछि कि एनी वन ऑफ यू इज डेडली कार्निवोर्स ओके ठीक अछि मोस्ट ऑफ अस आर कौन को कैटेगरी जीवा ओमनिवोर्स जीवा बोथ है ना कौन सो ऑनलाइन छुआ लिखुछंदी बोथ सर ओमनिवोर्स Omnivore. अच्छा ओमनिवोर्स ओके एगिटेरियन को कौन कुआ जीवो see these are all for own satisfaction है it is for own satisfaction if you claim yourself that sir I am an herbivore of course most welcome धीरे धीरे भेज रे जाउछ ठीक अछि ताले अंडा भोगो दोन देला बड़ मंदिर नै की भेज लडू जगह नहीं अंडा नहीं बोले जेमती किस दिन तले तुम कहते तुम क्लास रे कि देयर इज माने मध्य प्रदेश रे सुन कि नहीं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सुन ना ये रिसेंटली मासे तले सुनियो तो हैला देयर वाज अ केस दैट मध्य प्रदेश रे माने सिंस फ्रॉम सेंचुरीज दे वर्शिप सेंचुरीज हैला 1 मंथ में हेनी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिक्लेयर दैट वन कि से भलिया टाइप रो जो पर्टिकुलर्स माने शिवलिंग भागी पूजा करतले एंड एंटायरली मध्य प्रदेश रो बहुत जगह रे देखला बेलू सेटा डायनासोर अंडा आउ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जतले ताको सीज कला देयर इज अ ह्यूज टसल बिटवीन द लोकंकर कोन आस्था ना मरा मरी कहले तमे डायनासोर अंडा माने बुझछो तो हाउ मच ओल्ड इट इज मोस्टली तमरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल ज्योग्राफी पढ़ी छी ने ह टाइम स्केल ता पढ़ाइन टाइम स्केल ता सेपरेटली पढ़ाइन ने पढ़ी सेटा तमरो डायनासोर को टाइम रे थला मेसोजोइक एरा पर्टिकुलरली जदी मु कहबी मोस्ट जदी थला डायनासोर हला जुरासिक पीरियड रे हला तीनटा हमर ट्रियासिक क्रेटासियस जुरासिक हला सेही समय माने नियर अबाउट 65 और 80 मिलियन इयर्स से जो अंडा तार थिला लोक पूजा करी मरा मरी माने से एबिनि दी तीनटा गां रे कर्फ्यू लागि गला हला सब डायनासोर अंडा गडा सेही पटे भरछ ओडिसा पटे दिचटा किछि बाहरंतानी पुणी सेठी हमर गवर्नमेंट एठी देई जो एठी तो सब मो चलची पुणी हे जो मो अंडा सब पुणी सर नेक्स्ट को खाई देतन खाइबी की कुछ खाइबी अच्छा अच्छा ओके नेक्स्ट लेखा तापरे नेक्स्ट गला फागेटोट्रॉप्स गला नेक्स्ट लेखा ऑस्मोट्रॉप्स हला देन ऑस्मोट्रॉप्स they are defined as like chala that no sorry they are also known as micro consumers or decomposers oblique micro consumers hela anko kon kwa jivo samane also they are called as micro consumers hela
आगोटे कौन कहले decomposers or saprotrophs. Saprotrophs अंडरलाइन करो saprotrophs बड़े पचार देते टर्म एई पर्टिकुलर चैप्टर तुमको जदी सामाने पचार बहुत क्वेश्चन पचारन बड़े बड़े हैला जदी करबे सामाने केवल टर्मिनोलॉजी रे हैरान करन बहुत भूलभाल हो जाए एका टाइप रो लागियो ऑटोट्रॉप saprotrophs माने डिकम्पोजर्स एग्जांपल दलो बैक्टीरिया के सेमती के हु इज फेमस बैक्टीरिया के से डिकम्पोज करिया पे ताको धरि के आनला के से अर्थवर्म लेखा they gain or derive their एमन कौन करंती they gain or derived their food nutrients from decomposed organic matter. They derived or gain their food nutrients from decomposed organic matter. This decomposed organic waste is known as detritus. हैला सो मन रख तोर जदी एग्जाम रे पढुची कि डिकम्पोजर्स आउ डेट्रिटस ता माने या माने जहा हैला डिकम्पोजर्स माने जहा डेट्रिटस माने सेया और कोन हबो saprotrophs और कोन हबो देखो एथरे कोथरे तुम कह ई जहा जहा सब लिखा हला सेम जिंस डेट्रिटस सेम आ गुटे कोन हबो एनवायरनमेंट रे वर्तमान जदि मु कहिबी वल्चर को एई कैटेगरी में रखि परिबा कैन वी कीप वल्चर इन दिस कैटेगरी हैला रखि परिबा ताको कोन कहजे बड़े बड़े स्कैवेंजर्स के लिखला स्कैवेंजर्स सनुजित वेरी गुड सर मिस्टर सनुजित स्कैवेंजर्स हैला वी कैन आल्सो कॉल देम एज scavengers not avengers it is scavengers हैला सपोज गोटे तुमको पचार दिला एनवायरनमेंट क्वेश्चन कि पचार दिले तुमको इंटरव्यू रे कि हाउ scavengers are helpful to environment कहला केमते हाउ यू डिफाइन सपोज मु पचारली जन जाने करके पॉल्यूशन को रिड्यूस करछन आउ पॉल्यूशन हमें कहि परिबनी दैट्स नॉट एन ओके आउ कोन कहतलो See, scavengers are basically they help to digest the rotten crops. Crops माने CROPS crops मतलब dead body. ठीक अछि तो सेथरे कोन हबो पर्टिकुलरली कि एनवायरनमेंट रे दैट रिड्यूस योर कंटामिनेशन सबुठ बड़ जिंसला कोन तो जे जगह यदि कंटामिनेशन साबुनी कहथन इट वुड हैव मोर करेक्ट pollution is something different of course pollution is term but exactly it is specified to the contamination माने डेड बॉडी जदी तमर पडिला सपोज वाटर रे गोटे मुर्दार सड़ी की पडला कि गोटे गाय की ऊपर जाबी की मनुष्य जे भी पडला गोटे जदी सी पाखो गां रे सपोज द रिवर इज फ्लोइंग and the dead body is lying there hela maybe an animal or human whatever so whatever contamination happens mane those particular nearby village they consume the water for their own domestic use exactly yes or no hela so it is contaminated water it produces what kind of disease various types of disease like prathame jaundice hobo cholera
सब टाइफॉइड सब बाहर है सो देयर इज ए चांसेस ऑफ एपिडेमिक बुझो कि नहीं देयर इज ए चांसेस ऑफ एपिडेमिक दिस आर द मु तुमको कोन क्लास रे मैक्सिमम माने तुमको कंटेंट देबी कंटेंट सब स्ट्रांग रखो कि केमती गोटे स्कैवेंजर्स गोटे डेड बॉडी कोन टा करि परियो पॉल्यूट केमती करे हला सो कोन हबो मोस्टली जदि स्कैवेंजर्स हबो तमर एयर अपेक्षा वाटर कंटामिनेशन इज मोर मन रखो ठीक अछि एक्वाटिक माने पोल्यूशन हला इज मोर देन योर एयर पोल्यूशन डेड बॉडी मानन ठीक अछि तमे हैव यू रिमेंबर्ड इंडिया रे गोटे केस स्टडी मु कहूची माने इंडिया रे हेइतला हमर गुजरात रे प्लेग हेइतला प्लेग वायरस सुनथो लॉन्ग बैक आई थिंक 3 decades 4 decades बैक हैं की रेस्पॉन्स थिला जानिछ प्लेग हेइतला नहीं गुजरात रे एंटायर द सूरत सिटी वाज डेडली अफेक्टेड सीवियरली अफेक्टेड मन रखो इंडिया रे को जिंस कोन हेइतला मैं इथरु कहूची सूरत सिटी was deadly affected because of the plague virus कौन हितला से समय who was responsible Musa Correct. हला we can say ठीक है जी ही बहुत लोग मरथले इंडिया तापर ऑफ कोर्स मन रखो इंडिया जो इंसिडेंट हिची इट वाज अ लेसन टू अस हला we revamp we rectify ourselves हला the government and definitely we'll come out from the same thing not to repeat again ठीक है जी गुजरात रे की सूरत मन रखो सूरत सिटी put it लिखो this तम डेटाबेस से लिख लो एग्जांपल के बैक्टीरिया फंगी एग्जांपल बैक्टीरिया फंगी earthworm certain soil organisms bacteria fungi earthworm certain soil organisms है ना ठीक है जी then तापरे heading दियो species आज खाली वर्षा पाग ना ना मुझे आनी पकाए please mute yourself पखाल है ना species लिखी चला है ना they are the group of organisms they are the group of organisms that are capable of है ना group of organisms that are capable of interbreeding and है ना लिखा they are capable of interbreeding and producing an offspring here one breed of species interact with other breed here one breed of species interact with other breed one breed of species interact with other breed of species in various ways one breed of species interact with other breed of species in various ways they are है ना तापर लिखो नेक्स्ट there are 5 common type of interactions there are 5 common type of interactions number 1 competition predation competition है predation parasitism then
mutualism, then commensalism. Pacharandi, commensalism. COMMA, commensalism. ठीक है commensalism. Symbiosis रो माने synonyms है mutuality है ना पुनी heading दिए पुनी competition एटा चलना रे विषय सोच ऑक्सीजन में मुंटा कहीं खानसा मुंजले it's not working oh sorry. पछपड़ दरकार नहीं कम प्लस ठीक है तापर लिखा है competition लिखा here some limited resources can be used by different individuals it can be direct or indirect. It can be direct or indirect. देखो कौन है परिवा indirect case लगी चला सेठी indirect case for same grass food there is a competition between goat and sheep. For same grass food there is a competition between goat and sheep. पेन रो कलर चेंज करियो यस एटा ब्लू अछि ब्लू रे ठीक अछि ओके ठीक अछि indirect case रे Sir, competition between for a same insect competition between crow and owl. For a same insect there is a competition between crow and owl pecha माने डे टाइम नाइट टाइम रे हवनी ठीक अछि sir out थे रिपीट करन Sir, how to repeat, sir? indirect रे there is Sir, goat and sheep. for Goat an and sheep insect there is a competition between for an insect there is an competition between owl and crow. Sir, authority repeat करन starting रो स्टार्टिंग माने कंपटीशन रो sir अच्छा लेखा last को goat और sheep देखले limited resources can be used for different individual competition case रे कौन हुए here limited resources can be used by different individuals it may be direct or indirect ठीक है डायरेक्ट केस रे कौन हबो for same grass there is a competition between goat and sheep हैला for same grass there is a competition between goat and sheep and indirect रे कौन हबो for an insect there is a competition between crow and owl pecha next like a predation next is your predation predation है adjective तारा noun कौन very good predator यूज करो ताकि कहबी जेंति कहे कि बड़े बड़े हमें माने जोड़ा कि खाद्य कहंती
प्रे भी बेले हमें को का पे प्रे है कौन तार स्पेलिंग PREY नॉट PRAY है ना PREY प्रे तो कौन सा जेमती माने मुझे कहबी कि डियर इज द प्रे ऑफ टाइगर नॉट Tiger. ऑस रशिया रे सबुठी खाऊ भितरे भितरे खाऊ तुम गाँव खाऊ हरिण संबर संबर ना इडली हाँ? सांबर ओडिशा रा हमर ये एनिमल ना स्टेट एनिमल एट लेख प्रेडेशन here one organism predator feeds upon another organism comma known as prey known as prey other repeat kochu here one organism predator please underline feeds upon another organisms comma known as prey full stop hence predator gets benefit or advantage comma while prey gets killed for example tiger is the predator where Repeat. deer is the prey tiger is the predator where deer is the prey ହେଲା ସେମିତି ହେଲେ ତ ମୁଁ ବି କହିପାରିବି ଚାଇନାର ସମସ୍ତ ପ୍ରେ ଚାଇନାର ସମସ୍ତ ପ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମେ କହିବା କି ଫୁଡ ଚେନ୍ ରେ ଏଟା ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ पर्टिकुलरली वी कैन से दैट हैला नेक्स्ट लेक्चर थर्ड टा कौन दैट इज parasitism এটা कंप्लीट है এটা नेक्स्ट इज योर parasitism it lekha when there is a contact relation exists between parasite and host example ki leech tapeworm leech LEECH then tapeworm leech माने जोको उंकुनी हाँ we can say उंकुनी कौन इंग्लिश में बोल लाउज है ना लाउज LOUSC I think लाउज ना कौन लाइस सॉरी बहुत गुड़ा को लाइस कहते लाइस LICE ने लाइस ठीक है जी Sir, please repeat. next it like here host is not killed by parasite unlike predation बुझियला ओके
कोई बाजी को ब्लड बाहरलानी एट कोई बाजी छी बोधे अच्छा नेक्स्ट लगा तापरे फोर्थ रे म्यूचुअलिज्म here one species cannot survive by others here one species cannot survive by others here one species cannot survive by other one species cannot survive by other ठीक है one get benefit sorry one coach mutually they get benefit from each other mutually they get benefit from each other example E. coli example E. coli that uses our intestinal which is sorry that uses our intestinal worm nutrient rich wall worm nutrient rich walls and enables to regulate our digestive tracts by breaking down our food by breaking down our And enables regulate. also repeat करछि हैला use our warm nutrient rich walls of हैला intestine and enables to regulate our digestive tract by breaking down foods ठीक है so it is a bacteria generally known for their negativity but this is an friendly bacteria सेमती बहुत किछि अछन दे हैला जेमती वर्तमान Sir, repeat again. intestinal bacteria E. coli use our warm nutrient rich walls in our intestine and enables to regulate digestive tract by breaking down foods yeast भी हम yeast कौन करे bread रे हमर जो पाउंडटी जो होची bread ताको जो फुल होची ताको की करची yeast करची yeast is the main spelling very good YEAST हैला that is yeast that helps हैला जेमति की आमे कहबा दही जो फर्मेंट होची lactose bacteria हाँ तो नाटा पर्सन lactose bacteria there are so many useful તમે જાણછો even if generally it is tell that कि दही रे तमे केते बेले भी लूण आ चीनी पकेबनी पकेला माने तार दही रे जो पावर टा कर्ड रो डाइल्यूट हे जाय खास करके तमे माने चीनी तो बिल्कुल पकेबनी पर जनरली आमे समस्त उल्टाटा करू चीनी पके खाइ दो माडी दही माने मिष्टी दय हैला मिष्टी दही भले नि खाया पे आउच अमूल रो ना प्रगति रो सब पाउडर मिसा दही से नो टेस्टी लगे खरा दिने बेले बेले पखाड़ा हांडी हांडी दही हैला समस्त बसी गौ गौ करी खाइ देबे पूरा धरी की माछ सो वेरी गुड भजा माछ ना ये माछ Fried fish. होना टमाटो आ ये पड़ी छेची की भल लगे जनरली इट्स एन ओडिया कजिन्स टमाटो जेति हम ओडिसा न होची लंदन न यूरोप रे बहुत खाया डिमांड से माने भी छेचा पड़ा खाउचन छेची हैला हमठारो सिखिके हमठारो सिखिके और टमाटो सेकी की हां हम तो सेका सेकी भलो सबडे होनी
नेक्स्ट खाइबा कथा पढ़ला माने पढ़ा तनी रहो टिके खाइबा डिस्कशन कर दो हैला विल बी अगेन मोटिवेट तुम जान खाइबा कथा कहले काहे कहले मूड फ्रेश हो जाए हु कैन से जीवन तो खाइया पे ओके see that triggers a enzyme को एंजाइम एड्रेनालिन को सिक्रेट ये करे बढ़ाई दिए जो को हमर माने इंटरेस्ट आ फ्रेशनेस आ जाए हैला हैला प्रेशर रिलीज करे से जो खाइबा जिनसटा एड्रेनालिन सिक्रेट हे जन जन कथा कहउथबे ता पाटर लाळ गडी पड़थबो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन फैक्ट इट हैपेंस हमर बडे हुए नी कथा कहउथवा पूरा लाळ टपथबो हैला एक्सेप्ट सिद्धार्थ और हुए सर डेलिशियस फूड देखिले हो dopamine how come dopamine no dopamine is something others no dopamine is something others things dopamine तमे जो छोटो छोटो शॉर्ट वीडियो देखु जो 20 सेकंड सेकंड सेटा डोपामिन सिक्रेट कर छ हैला सो जम्मा शॉर्ट देखनी किंतु यार हमें बर्तन अभ्यस्त रील्स हैला बर्तन रील्स देखिया पे बहुत जण रील बनौ छ हम देखु पर समस्त जो हैं हां को जो हार्मोन सिक्रेशन हेले डोपामिन हां कोन कहू छ तू रील्स बनौ छ बनेक दबो म दि तीन नाम देखिबी नेक्स्ट लेखा म्यूचुअलिज्म सरला तापरे कमेंशियलिज्म हियर कमेंशियलिज्म रे लेखा two species involved here two species involved where one species gets benefit here two species involved comma where one species get benefits comma pudi comma diya though not directly involved directly se involved nahi example ke de par example kai guy डायरेक्ट आंसर एटा हम कहितली वल्चर आउ कोन एपरे जेमती not directly these are involved but one is not directly get benefit ठीक अछि अच्छा जेमती तमरो ये रे भी हे परिबो we can say the parasites also in some cases हला but एट लेखा example vulture follows tiger path in search for prey vulture follows tiger path in search for prey बेले देखु तो एनिमल प्लैनेट और डिस्कवरी रे देखाय नी बाघ जाउ तो vulture ता पछर पछर दो तो काई ना ताको इजी रहे जनरली scavengers पहले scavengers detritus हो जीवन जेंति बड़े बड़े तमे हिंदू पेपर पढुथो देयर इज एन आर्टिकल समटाइम्स में देखे कि माने एटा मु निजे माने जिंसरा किंतु वर्ड रे यूसेज देखो you can also use that one while writing an essay or any of the topics जेंति कहा जाए मुझे दिन कहबी now in the coalition politics India is in coalition politics now in the coalition politics few political parties are making commensalism can say that one for example कांग्रेस पार्टी करूनी जहां से करछ हमर करनांती कांग्रेस पार्टी इज मेकिंग कमेंशियलिज्म देखो तुम एडिटोरियल पेज पढ़ो हम तुमको सब वर्ड रो बहुत हम तुमको कहना जस्ट फॉलो द थिंग्स विल बी योर कंटेंट विल बी हाई यू विल लर्न दैट हम इंग्लिश किछ हो नो इंग्लिश बहुत पावरफुल ही जो कमेंशियलिज्म जंदु का कौन भाई बिकॉज़ व्हाट द बीजेपी इज डूइंग द रूलिंग पार्टी दे आर द फॉलोइंग द सेम थिंग होनी देखो तुम और की पॉलिटिकल माने डे टू डे जिंस रे you can write that one
in the coalition politics, some of the few political parties makes commensalism. For example, Congress party now. जहाँ से करछे संगे संगे समान करछन कि जाई गोटे से जो काली मु देखथुली सेडे ये रे काली जो रामलालांकर हैला कित्ते कित्ते मिछुआ सब बसी यज्ञ करछन चारियाडे मैं तांक पर चारा किछि नै whole country will be celebrate. I was just I was out of station and was coming nearby, that is your Harichandanpur, Kendusar sepade mu astuli mane small tiny village hamlets mane block gote mane ite grand celebration करथान माने जस्ट मु गाड़ी चला देखुथा समस्त भगवा कलर पिनथांती सब सब जगह तो भुवनेश्वर कटक तो छाड़ा हम कथा कहूची कि संबलपुर सब वाडे माने सेलिब्रेट हिची हला सो दे हैव नो ऑप्शन इन फैक्ट the great Shankaracharya who was giving a negative statement, he also changes his statement. So we can say that one ei hisab re karibo ha commensalism we can word that one मन रख काहे कि मु तुमको ए जिंसरा कहूची जानु छ तमे गोटे वर्ड जदी commensalism लिखुछ तमे गोटे ए गोटिए वर्ड हैज पावर टू मेक ए सेंटेंस माने गोटे सेंटेंस को तमे बंचै दो 10 5टा वर्ड को हला मु कहबी few coalition parties few groups are making commensalism तमे तमे गोटे बड़ explanation को बंचै देलो that helps in your enrich when you write बुझियो छी हला सब बळे मन रखो जेते पढु छ सब बळे एप्लीकेशन पार्ट टाको सब बळे स्ट्रांग रखो सिविल सर्विस इज अप्लाइड सिविल सर्विस इज नथिंग बट अप्लाइड इज हाईली क्रिएटिव एग्जाम किछि डायरेक्ट आसु की कंप्लीटली तमे जानि छ इट इज मोस्टली इंटेलेक्चुअल एंड मोस्टली इट इज थॉट प्रोवोकिंग ठीक अछि सब बळे कांसेप्ट यूज करो आ सब बळे ऑलवेज ट्राई टू पुट इट इन योर अप्लाइड पार्ट केमति मको यूज करबी को जगह रे केमति हला and eventually I will show you the tricks जिनसर तमर ज्योग्राफी को जाय जायतिला रे पढि दिली सॉरी ने सपोर्ट तांगा सॉरी गलान सो ओके एटा इने चलियो अब पढि मु अपर नै जी ज्योग्राफी नै जी मॉर्निंग रे सरलाइन बहुत आगे गेलन सो ती पचर थे हाई जीव तांगा ओशनोग्राफी चल मु को नै जीवा पारे मु नै जी डोंट वरी हला प्रीलिम से सर दो डोंट वरी तापर देख लेखा पड़ी जी गोटे नोट दे के लिखो जीनोटाइप लिखि चलो टर्मिनोलॉजी जीनोटाइप it is defined as a particular gene or set of genes carried by one individual, particular gene or set of genes carried by or set of genes carried by an individual. कौन सो लिखा हो जे कौन देवव्रत महंत in Hindu mythology temple is God's body and idol is its soul. So but Shankaracharya also write about the incomplete features of the temple and doing puja and all. They must have thought something for the consecration ceremony. Without full body, how can give soul? See, Zubendu, what I can say, आम घर जो प्रतिष्ठा होची आमे कोन पूरा कंप्लीट करी बसछु इट्स नॉट दैट टाइम ना आमे तो घर पूरा कंप्लीट करनु आधा करी किछि पार्ट करी कि तार पसु धीरे धीरे सब काम होची सो व्हाट इज द रॉन्ग विथ दैट वन इट इज ऑल अबाउट आवर थॉट्स एंड प्योरिटी ऑफ माइंड हैला मेकिंग अननेसेसरी पॉलिटिसाइज इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट इज व्हाट द थिंग इज दैट व्हाई वी हैव मु आज तुमको कहूची गोटे जिंस जस्ट शॉर्टली ई हुए रे हैला that is why hela mu kichi kohni bit politically suna kemti mu kichi kaha na kodi jinse dharibini but it is understood and that is why after Harshavardhana why we have been invaded by outsiders bujhucha why we have been invaded by outsiders foreigners after Harshavardhana period is ki nahi till 1947 माने 1000 years it is because of lack of unity we have been invaded
And now the time has came again to reunite the thoughts apart from the absurd thoughts. Very clearly I'm saying that one. And why I'm saying all these things? Because of this particular ideology, they are various part of the globes, they are consolidated because of their particular common unity or common integrity factor. Hala? Lekha tapare genotype re kon likhilo carried by individual. Example, gene linked to blood function disorder, disease like leukemia, gene linked to blood function disorder disease like leukemia, sickle cell, leukemia and sickle cell. leukemia रे कौन हुए? ब्लड कैंसर हुए. सिकल सेल रे कौन हुए? सिकल सेल रे कौन हुए? आरबीसी ना, which one is affected, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी? सर दा भलिया हे जीवो, दा भलिया हे जो, हां आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी हला तो कौन हुए? व्हाट हैपेंस? Yes, we can say that one, the oxygen carrying capacity to the blood has drastically reduced. ठीक है जी? leukemia माने sickle cell. So does this problem in India still exist? Tribal areas, Most of the tribal areas. Because of nutrition availability. Less nutrition availability, these things particularly perpetuate in the tribal belts. Eradication of sickle cell. Pradhan Mantri. Very good. Okay. Terminology, ecological terminology. You can write here ecological terminology. Ecological terminology. Number one first. Just for information. जे मु नोट करके डाकिल ना, नोट करी अलग लिखली wherever केतलो जोटी एक्चुअली कोन हुए खाली हमें पढिबा सबले मन रख जो भी देखो एनवायरनमेंट गोटे चैप्टर इट इज ह्यूज वन बट सब बेले मन रख मु सब एग्जाम पर्सपेक्टिव रे पढ यू आर नॉट गोइंग फॉर पीएचडी और पीजी एनवायरनमेंट बहुत वास्ट तो देखिबो भाई इट इज टू ह्यूज बट सब एग्जाम ओरिएंटेड रे पढ that makes you shortcut otherwise तमे खाली एनवायरनमेंट एंती पढतो सरी बर तो सब जिंस मु पीएचडी डॉक्टरेट करी के सारी के रिसर्च करछि जिंस ऊपर हला से जो जेतल भी पढिबो मन रख क्वेश्चन बेसिक रे पढिबो माने एग्जाम टाइप रे केमती आछि कोन हे परिबो सो सब मन रख मु से भी जो कहे कि कम थ्योरी पढ बट सेही थ्योरी के तमे अप्लाइड एप्लीकेशन रे पकाओ केमती क्वेश्चन हे परिबो कोन मु कहि परिबो कोन मु करि परिबो बुझछु कि नै सो दैट हेल्प्स यू इन योर एग्जाम हॉल that helps you in writing ability, that helps you in interview while saying but the environment is the most preferred topic in interview it's a very important thing बुझछु कि नै से जो सब बळे भाबो कि मु केते जानि कि कम जानि कि केते मु तो एप्लीकेशन करबा मन रख तो आज भी मु कहूची as per my experience सेही पिला माने काफी एज रे थांती जो मानकर एनालिटिकल पावर ता बहुत स्ट्रांग था that is called based on your concepts and fundamentals ठकीबा को हले दुनिया प्रकार बुझছো कि नहीं अरे जदि मु ठक हेबी ऑफ कोर्स स्टूडेंट माने ठक तो मु तुमको से जो कोन कहे कि कांसेप्ट ऊपर ध्यान दियो गोटे छोट छोट कांसेप्ट तुमको हेल्प कर तो ए जो जिंसटा पढुछ आज तुमको नेक्स्ट तुम इकोलॉजिकल पैरामीटर हेल्प करियो सो कांसेप्ट स्ट्रांग रख
आ जहां पढ़िलो ताको तुम भाबो केमति तुम इकोलॉजिकल जेमति मु तुमको गोटे कहले एसए रे केमति अप्लाई करियो कमेंशियलिज्म वर्डटा जेमति तुमको कहूची पर्टिकुलरली सेम जिंसरा केमति तुम एठी अप्लाई करियो लेखरा वाला एसए रे हैला माने छोटिया जिंसर तमर कोन आई एम हियर टू मेक योर एफर्ट्स लेस स्मार्ट वे रे काम करी कि तुम केमति भलो सक्सेस पाइ परियो केमति लेखि परियो केमति एनरिच करि परियो खाली पुड़ा एम्पुडी की नहीं गेले किछ लाभ नहीं केमति ताको तुम एप्लीकेशन करि परियो दैट इज द थिंग बुझो कि नहीं ओके सो यूट्यूब रे तो सब जिंस मिलुची बट थिंग इज दैट व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ क्लास इज दिस वन व्हाट यू लिसन एंड व्हाट यू अप्लाइड इन योर लाइफ पर्टिकुलरली एंड एग्जाम तो बहुत बड़ा एग्जाम तीनटा लेवल तुम पार करछो सेटा को सब मन रखो जहां भी पढुछो सब माइंड रे रखो एप्लीकेशन घोषिवाटा मन रखो बर्तमान तो घोषिवा नहीं तुम केमति अप्लाई करियो अब घोषिवा माने तुम जिंसटा केतला एनालिटिकल हे परियो सब बेले मु मन रखो आज भी मु कहबी तीनटा लेवल प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बर्तमान एमिति हे गेला ओपीएससी करला पर्टिकुलरली हला सब जिंस कंप्लीटली अप्लाइड एप्लीकेशन पार्ट जहार एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग इट इज वेरी इजी टू क्रैक हला आगुरु ए दीटा तो फेमस सेंटर तो रही थांती हला बर्तमान ये भी जो नथिला बर्तमान ये भी हे गेला प्रीलिम्स बुझो कि नहीं सब मन रखो निजर स्ट्रेटेजी स्ट्रांग रखो रणनीति जोटा कहंती हला अभिमन्यु आज मल्ला इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हैला कि से इंटेलिजेंट नथला कि से माने योद्धा नथला कैपेबल नथला इट इज ऑल बिकॉज ही वाज लैकिंग इन स्ट्रेटेजी बुझो कि नहीं सो आई एम हियर टू लेसर योर एफर्ट्स इन ए स्मार्ट वे ठीक है जी नेक्स्ट लेखो इकोसिस्टम सर एनवायरनमेंट में को बुक रेफर करू बुक्स तो बहुत ही अच्छी तुम देखिबो जो बही बर्तमान जेमती शंकर आईएएस इज द मोस्ट बट मु तुमको कहबी शंकर आईएएस छडा आर बहीटा मोर मन पड़नी सेटा पढ शंकर आईएएस इज टू ह्यूज व्हिच वन पीएमएफआईएस हां से भी भलो करछ मु तुमको जदी कहबो बेसिक्स मु तुमको कहबी म कथा मानिबो एनसीईआरटी पढ एनसीईआरटी इज द बेसिक थिंग तमर जदी ऑप्शनल अछि एनवायरनमेंट रिलेटेड किछि डेफिनेटली तमे पढो जेंति कि ज्योग्राफी ऑप्शनल एनवायरनमेंट के पार्ट अछि डेफिनेटली ताकू पढो एनसीईआरटी प्रथमे पढो मु जदी मते जदी कहबो आई विल से यू प्रिफर एनसीईआरटी शंकर आईएएस एन ह्यूज वन जो माने मु तुम कहबी से बही कोन पीजी एबव लेवल पीएचडी लेवल रो अछि एते दरकार नै एते जिंस तमर तमे खाली ताकू पढिबो तमर पळेबो 6 मास ह्यूज वन एनसीईआरटी पढ़ो क्लास नोट देखो पीएमएफआईएस जोटा को शंकर इज ह्यूज वन तमे बखरे जे टाइम अछि करो बिकॉज़ आई एम वेरी प्रैक्टिकल टू से दैट वन जीएस इज नाउ बहुत ह्यूज केते बड़ कर दिला जीएस तो कहा को पढिबो खाली ज्योग्राफी एते लंबा सिलेबस रानी पुनी एनवायरनमेंट कहा को पढिबो सो नो प्रैक्टिकल अप्रोच नियो नॉट नथिंग टू बी स्टेरियोटाइप्स आई एम वेरी प्रैक्टिकल सेइंग एनसीईआरटी व्हिच क्लास एनसीईआरटी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम तमे देखिनियो 6th थ्रू 12th ओल्ड एनसीईआरटी सब जिंस देखो तमे 6th through 12th I would suggest जदि शंकर आईएएस पढुछो डेफिनेटली तमे पूरा माने मिसलीड करिवो रास्ता भटक जिवो तमे पढी परिवो दैट इज तम पाखर जदि टाइम अलाउ करछ बट टू बी वेरी केयरफुल मु तुमको केयरिंग हिसाब रे कहूची जीएस इज वेरी वास्ट तुमको खाली सेटा पढिवार नै तमे मोस्ट ऑफ टाइम अछि पढो बट एनसीईआरटी पढी की पढो जदि तमे एनसीईआरटी प्रथम हला बेसिक्स फाउंडेशन एनसीईआरटी देन यू गो फॉर शंकर आईएएस बट शंकर आईएएस जदि मु कहबी जदि तमे पढुछो यू विल किल योर टाइम जदि तम पाखरे किल मु तुमको मना करनी तम टाइम तम नष्ट हो एंड यूज वन से बही देखि से केटा मोटा तमे एनसीईआरटी पढो पीएमएस पढो क्लास पढो को बुझो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सब बुझो पेपर पढो मैगजीन पढो सेतिर तमे पाइबो कारण कंप्लीट से बही जदि तमे देखिबो से बहीटा हला कंप्लीटली तमर पीजी माने पीएचडी लेवल लो बहीटा देखि से भलो बहीटा से हला एते दरकार नै बुझछ कि नै ताकि तम पाखरे जीएस तो केते चैप्टर हलानी कम से कम तमे जदि देखिबो सब पार्ट्स मु करबी मिनिमम 12 टा 15 टा चैप्टर तमे पढुछ से वेराइटी पार्ट्स रे नो 15 कैन यू एबल टू इमेजिन तमर समय केते 2500 मार्क रो परीक्षा तमे देबो टोटल ता भितर 2500 2900 3000 धरो टोटल मु सब विषय कहू हैव यू गॉट द टाइम प्रैक्टिकली आ जदी तमे एन्जॉयमेंट पे पढी पर यू आर मोस्ट वेलकम आई डिड नॉट टू से दैट वन है ना बट आई एम वेरी प्रैक्टिकल सिंस आई एम कल्चर्ड इन दिस फील्ड हला रेस्ट इज अप टू यू योर चॉइस बट ऑलवेज आई एम अवेलेबल आ मोर सबले काम होला मु तुमको सत कथा कहबी ठीक अछि एनसीईआरटी आगे पढो
देन क्लास रे करो रादर तुम फोकस करो पेपर रो मैगजीन से जिंस पे इकोसिस्टम लेख इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी रे लेख इकोलॉजी इट इज ए लेख it is a community of living organisms. It is a community of living organisms. Please underline, it is a community of living organisms in conjunction with, please underline, living organisms in conjunction with non-living components, in conjunction with non-living components, in conjunction with non-living components of their environment, Bracket रे की air, water, mineral, air, water and mineral soil, comma, interacting as a system. Interacting as a system. लिखी चला, both are connected. लिखी चला, please continue. Both are connected together. Both are connected together through nutrient cycles and energy flows. Both are connected through nutrient cycles and energy flows. Sir, connected through Nutrient cycles and energy flows. Please underline nutrient cycles. Both are connected through nutrient cycles and energy flows. Next, ecosystem gala. Hala? Ecotone. Ecotone. देखो एगुड़ा तुमको जो मु डाकुची केवल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स रे वर्तमान दोची 1 2 3 तापर दोची व्हिच वन इज करेक्ट बोथ है सेम पर्सपेक्टिव रे तमे पढिबो इकोटोन लेखा इट इज डिफाइंड एज a zone of tension zone of junction underline karo between two or more diverse ecosystem between two or more diverse ecosystem between two or more diverse ecosystems full stop here ecosystem can be local or regional here ecosystem can be local or regional comma narrow or wide narrow or wide in case of ecotone intermediate situation arise intermediate situation arise example at coastal areas at coastal zone mangrove forest comma at coastal zone comma मन देखि लिखो अप्लाइड करिवो जेतले एसएफएस रे लिखिवो इसु एग्जांपल दबो हला at coastal zone mangrove forest are represent as ecotone at coastal zone mangrove forest represent an ecotone between between terrestrial ecosystem
and aquatic. Terrestrial ecosystem and marine or aquatic. Marine or aquatic. ठीक है जी. Other examples are estuary. लिखनी. Other examples are estuary. माने मुहान जोड़ा कौन. Other examples are किए. Example estuary. Grassland, river bank, river bank, grassland, then river bank. मैं बुझे बुझौछु तुमको एटा बहुत बड़ भलो जिंस बुझ बेसिकली केमती. सपोज तुमर गोटे क्वेश्चन पड़ला मते कोइटी प्रथमे कि grasslands are the ecotone. How come? Very good. हैला तमे ऑलरेडी हमें जेतु से काइन करे जेतु तमे ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ी सरछंदी कि माने सवाना ग्रासलैंड्स दे आर बेसिकली माने स्टेपीज मु कहबी. दे आर बेसिकली कहर कहर डेजर्ट आउ सवाना माने स्टेपी ग्रासलैंड्स गुडा से माने कहर इन इकोटोन बिटवीन द डेजर्ट एंड सवाना. ठीक अछि. अच्छा नदी रिवर बैंक माने रिवर बैंक ता कोन पे जेमति फॉर एग्जांपल जेमति मु एटी कहली रिवर बैंक एटी हला सपोज मु कहली दिस इज महानदी रे रिवर बैंक इट इज बैंक बिटवीन कोठी सपोज मु नेली केंद्रापड़ा हला महानदी दैट इज एन एस्चुअरी और रिवर बैंक बिटवीन द बे ऑफ बंगाल आउ योर टेरेस्ट्रियल लैंड दिटा भीतर रहल. ठीक अछि. केमती पॉलिटिकल ले केमती तमे कहि परियो सोशियोलॉजी रे केमती यूज कर परियो एडी गोटे जिंस लिखि दियो पुनिया गोटे ऊपर. इकोटोन इज आल्सो नोन एज जोन ऑफ टेंशन. जोन ऑफ टेंशन is also known as zone of tension. केमते तुम एग्जांपल गोटे दे परियो गोटे कल स्टेटमेंट कलो सपोज मु पचार जे तुमको निजर एबिलिटी बड़ा थिंक फास्ट केमती गोटे स्टेटमेंट गढिबो. देवर्त कोन लिखले इट इज बिटवीन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड महानदी प्लेन. सिमलीपाल इज एन इकोटोन. वी कैन से केमती कहबे जमती गोटे पर्टिकुलर इवेंट नहीं कि मु कहूची हैला सपोज मु कहि परबी कि long back Ayodhya was an ecotone between two groups. Babri Masjid was an ecotone between two groups. हैला से भला हिसाब रे तमे जिंसटा को लिखियो इकोटोन जंदी गोटे किछि टेंशन बे जंदी सपोज मु कहबी कि before the partition or the partition of Bihar and Jharkhand, Chota Nagpur plateau, we can say that one कि particular सेटा को माइंस एरिया टा हाँ your before the partition your Daltonganj is an area. Daltonganj is बहुत बड़ा सीमेंट फैक्ट्री अछि मन रखो तुम पढ़े भी इतले इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़े भी कहि भी. Before the formation of the states Bihar and Jharkhand, Daltonganj was an ecotone in between the North Bihar and South Bihar. बर्तन अलग है Dalton, we can say that one. तुमको सेंटेंस फॉर्मिंग कथा कुछ लिखला बळे डाल्टनगंज मारी के देखियो तमर कोथे ऑप्शनल ए तमर एटलास रे देखियो झारखंड रे सदर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट रे डाल्टनगंज हैला मन रखो डाल्टनगंज बहुत इकोनॉमिकली प्रॉस्पर एरिया डाल्टनगंज. ठीक अछि एटी डाल्टनगंज छोटा नागपुर प्लेट्यू जदी बनेबी एई जगह रे डाल्टनगंज अछि. दिस इज डाल्टनगंज. नाउ इट इज कम्स अंडर झारखंड. तो मु तुम कोन कहबी इट वाज एन इकोटोन केमित मु तुम कहया कथा हाउ यू राइट स्टाइलिश इंग्लिश पर्टिकुलरली
इकोटोन तुम लिखिदेल माने कौन गोटे पूरा वार्ड टाक तुम कमेदेल 6-7 वार्ड कमीगला कि नहीं तुम से जिन शिख एप्लिकेशन पार्ट है ओके नेक्स्ट लेखा निच NICHE डिफाइन कर NICHE niche it refers to please लिखी चलो भला भाव लिखो नोट्स refers to the unique role it refers to the unique role or place of species unique role or place of species in an ecosystem unique role or place of species in an ecosystem hence a species niche includes hence a species niche includes the physical biological hence I'll repeat kuch hence a species niche includes the physical biological and chemical environment physical biological and chemical environment to which the species is adapted to survive reproduce adapted to survive reproduce sir chemical environment to author sir repeat kurche hence species niche includes the physical biological and chemical environment to which the species is adapted ADAPED adapted to survive reproduce and staying hello and staying or living there and staying there or living there comma as well as performed its role as well as performed its role as consumer as producer and consumer आगे लिखा as producer and consumer bracket रे कौन for food resources पुण लिखी चलो if it is niche construction बड़े पचारंती niche construction please underline niche construction if it is niche construction comma then an organisms then Niche construction. comma then an organism alters its own environment then an organisms alter its own environment by undergoing a physical change thus changes one habitat to another next lekhi chala sardawaj habitat what is habitat it is an ecological environment it is an ecological environmental area comma inhabited by
inhabited by a particular species of animals, inhabited by a particular species of animal, plant, or other type of organisms, or other type of organism. Here, next point, right? Here, they get their food, shelter. Here, they get their food, shelter, safety, foods, hello? Shelter, safety, and reproduction, mate, and reproduction, mate. Sir, reproduction? Mate, MET. Then, Leah, ecological productivity. Ecological productivity. It refers to the rate of generation of biomass it refers to the rate of generation of biomass in an ecosystem it is expressed in units of mass per unit area ठीक है पुन लेखा इकोलॉजिकल सॉरी तापर लेखा productivity of autotrophs such as plants is called primary productivity. Other repeat kuch productivity of autotrophs such as plants is called primary productivity, while that of heterotrophs such as animals is called secondary productivity. Next, like primary production. This signifies the synthesis of new organic material from inorganic molecules
synthesis of new organic material from inorganic molecules such as water and CO2. Water and CO2. Here plants, algae and cyanobacteria here plants, algae and cyanobacteria are responsible for primary production. Cyanobacteria are responsible for primary production. Through the process of photosynthesis, they use sunlight to synthesize through the process of photosynthesis. They use sunlight to synthesize organic molecules such as through the process of photosynthesis. They use sunlight to synthesize organic molecules such as sugar. Mr. Colleagues, ornamental language Congress can consider as an ecotone, and it says it's secular sometimes. Yes, yes, good. ठीक है कालीठू में तुमको जोटा हबो कालीठू में तुमको सिंस इट इज फर्स्ट क्लास ओवरऑल कालीठू में तुमको क्वेश्चन दबा आरंभ करिवे हैले आ जो माने हेइन रिपीट जो माने करछो ठीक है इट्स ओके जो माने नुवा कंप्लीटली आस्क देम टू अटेंड दैट वन व्हाट इज वेरी डिफिकल्ट हबो पुनी पछरे वंस तुम पार हे जो गोटे क्लास पर दुटा क्लास पर इजी रहइबो हैले नेक्स्ट लेखो जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन GPP gross primary production. What लिखी gross primary production. Gross primary production. Look, it is the total production. It is the total production of organic matter. It is the total production of organic matter synthesized by primary producers. Synthesized by primary producers per unit area, per unit time. It is the total production of organic matter synthesized by producers per unit area, per unit time, with energy utilized for respiration. Sir, repeat. It is the total production of organic matter. It is the total production of organic matter synthesized by producers per unit area, per unit time, with energy utilized for respiration. With energy utilized by respiration. ता माने कौन बुझ्छ एठी? हाँ श्रावणी की करूची? प्रोड्यूसर्स करूची
प्रोड्यूसर्स करछे हां वेरी गुड है तो कौन हम प्रोड्यूसर्स जो पर्टिकुलर मेनली सी को पर्टिकुलरली जतले से फूड चेन को तार भांगुची है तो इट प्रोड्यूसेस योर एनर्जी है से जो कौन लिखली ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स वेरी सिंपल है जैसे फॉर एग्जांपल एनी प्लांट वी कैन से है एनी प्रोड्यूसर प्लांट ओके नेक्स्ट लिखो जीपीपी नेक्स्ट चलो जीएनपी ग्रॉस सॉरी एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन नेट प्राइमरी प्रोडक्शन the difference between it likho npp and gpp the difference between npp and gpp is comma at npp the energy utilized for respiration by producers at npp the energy utilized for respiration by producers is excluded energy utilized for respiration by producer is excluded unlike gpp unlike gpp माने सेठी कोन होतला यूज होतला एटी यूज होनी एग्जांपल Sir, again repeat. the difference between npp and gpp is that at npp the energy utilized for respiration by producer is excluded is excluded comma unlike gpp रे कोन होतला एटी कोन होची exclude होची एग्जांपल gross secondary production yes we can say that one aguku secondary producer is माने जेमति कोन होबो तमर फूड चेन रे एनर्जी रे तले कमी जिवो आ पर नेक्स्ट चैप्टर रे काली पढेबी फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम सेतले हम पढेबी तले एनर्जी लेवल टा फूड एनर्जी लेवल टा तले कोन करे कोन रखो प्रोड्यूसर रो कंज्यूमर जिवो कंज्यूमर पुनी सेकेंडरी कंज्यूमर को जीवो सेकेंडरी कंज्यूमर पुनी जीवो टर्शियरी कंज्यूमर को सेही समय कोन होबो तमरो एनपीपी टा कमी जीवो है ना सेही समय मन रखो एटा जीपीपी बढ़िबो उल्टा एनपीपी कमियो त माने इफ आई मेक द पिरामिड हला काली सेटा हम कहबी इफ आई मेक द पिरामिड काली क्वेश्चन भी देबी तो जीपीपी एमती बढ़िबो हला जीपीपी इज इंक्रीजिंग काहे की एटी तमरो प्रोड्यूसर अछि हला काली हम कहबी देन इट इज कंज्यूमर 1 एटी मु लिखली देन कंज्यूमर 2 देन सी 3 तो এই কেসে কোন जीपीपी बढ़िबो किंतु एपटे कोन हो एनपीपी कमिबो रिड्यूस करियो एनपीपी रिडक्शन एटी जीपीपी इंक्रीज करियो है मैं गोटे तुमको कहीं कहूँ जानछो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पाई अगेन मु कहूँ जहाँ भी पढ़ुछ सब मन रख केमती परीक्षा क्वेश्चन आस केमती मुझे अटेंड कर पारिबी है ठीक अच्छे डायग्राम काली डायग्राम बहुत जिनस करी काली क्वेश्चन भी देबी बहुत जिनस करी है वर्तमान तुम लिख ऊपर लास्ट में कहि की करबी लिख एना वर्तमान बायोस्फीयर बेसिक जिनस डायग्राम करो
हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर तार इंटरेक्शन पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस इज ମୁଁ तुमको कहली एनर्जी टा रिड्यूस हबो मु एटा जो कहली एनपीपी सेटा एनर्जी रिड्यूस एटा जो मु ए फैक्टर लिखिली दिस इज एनर्जी ऊपर हैला त मु जेटा कहली एटी खाली लिखिनी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एनर्जी रेट तमरो इंक्रीज हबो एटी रिड्यूस हबो अच्छा मते कोन फोन दे मोर अच्छा मते को वर्तमान बायोस्फीयर आमे कोठ रहउछ आ भीतर आमे लिथोस्फीयर रहउछु आमे बायोस्फीयर अछि तो कहल प्रथम लिथोस्फीयर रे माटी ऊपर रहउछु से जते पैराग्लाइडिंग करिवु आकाश रे झुलथु सेटा भी तो होई परिवो तो एटमॉस्फेयर रे अछि पानी रे पहरछु कहबु मो हाइड्रोस्फीयर रे अछि हैला हां सोनुजीत कोठी अछ आमे मिसी की अछु कोठी बा तमे मिसी की अछ कोठी मिसी की अछ बायोस्फीयर सो बेसिकली आमे देखिबा कोन कि we are living in the intersection of the three things it is atmosphere it is lithosphere and it is hydrosphere ठीक अछि तू तुलसी पळा तू माछ ही पहरी बुझा हैला I will not say that you can claim that you are living in biosphere rather you are an aquatic अच्छा ओके एमती जो देखो बड़े बड़े जलपरी मरमेड हैला दैट इज aquatic पर मिछ गोडा न सब देखो रील रे सब देखोनी जलपरी गोटे सोची अच्छी those are all fantasy you cannot say that one बहुत जन का इट्स एन मिथ it is not actually true मरमेड जो देखो जे रशिया रे भासी जेटा सब मिछ सब नो अच्छी they come out from the hallucination it is not like that one केही जेमते नांती महानदी रे थिला महानदी रे थिला की बा मु कह अरे मते आज कुह तमे महानदी कोठी हेले मु जाई देखिबी हम घर पाखर महानदी अछि कटक रे हैं कोठी जोबरा निकट रे कि रे हैं महानदी रे मर से आज भी मरमेड गोटे स्टिल लोक गोटे डिबेट गोटे बहुत जण देखंती नहीं जलपरी तो हेई जा जलपरी कुछ कि नहीं तो कम से कम समुद्र तळु मुक्ता आ सुना नहीं कि तो आसु हाँ there is a small whispering in class yes सिद्धार्थ कौन कहू जलपरी देखिबु जीवु हैं हिमालय रे 80 ओ जो 80 हो जो बुलचन से गोडा स्टिल आई एम नॉट श्योर दैट वन हैं कौन बुझ तरे क तो वॉइस टा मते बहुत भल लागे सिद्धार्थ ना कौन ता नाम बोल आशीष तू आशीष क तो वॉइस टा पूरा मस्कुलाइन वॉइस क कौन कहू क 80 विषय कहू अरे कहूनु झड़ा अच्छा छोटा भीम ओहो हो आशीष इज टेलिंग दैट वन यू आर सीइंग दैट वन इन छोटा भीम ओके ओके सेटा ट्रू नो के जन कहउचंदी जानिछ तो सुनी तू को हमर के जन कहउचन सुभाष चंद्र बोस बोलचन से बळे हां कम दीस आर ऑल यू नो अब्सर्ड ऑल टू से दैट्स वन अच्छा ठीक अछि जे थांतु आमे जिबा आगे सिविल सर्विस क्रैक कर तापर जिबा देखिया पे मते डाकियो निमंत्रण पत्र देबो मु जिबी धर के हैला वर्तमान को वी आर मोस्ट लिव इन बायोस्फीयर व्हाट इज द रोल बायोस्फीयर रे ए माने तीन जन के मते को एई तीनटा भितरु सब डाकिबी आगे को मते को कि इफ एनी वन इज लैगिंग एनी वन कंपोनेंट इज लैगिंग can it is helpful us to survive we cannot sustain काहेकि जदि एटमॉस्फेयर रहबनी माने एयर रहबनी वी कैन नॉट लिव जदि एयर भी रहला पानी न लिव मरि हेबनी
So also lithosphere. And how lithosphere is important to us in terms of soil, because of the soil we generally get foods because of that one. So in terms of that one, lithosphere is very much essential for a fruit gets. In fact, water, without water we can't live, without air we can't live, without soil also we can't live, because we are getting our food items है। So आमे कहबे कि ए डायग्राम टा करलो, ठीक अछि, वर्तमान लेख सर चलो जीपीटी पर तमे कोन रेक्टेंगल लोकाला भीतर रखी दियो। I will always suggest while you making this one, always keep it in a rectangle. देखो बायोस्फीयर रे basically it is a Greek word. Basically it is a Greek word, that defines bio means life, bio means life, sphere means zone. Bio means life, sphere means zone or area. It is defined as the layer of the planet Earth. It is defined as the layer of the planet Earth where life exists, layer of the planet Earth where life exists, ठीक है जी। This layer, देखिए चलो, this layer merges up to 6 kilometer. This layer merges up to 6 kilometer height above sea level. 6 kilometer height above sea level and 200 meter depth below ocean. Depth below? And 200 meter depth below ocean. But oxygen starts reducing. Oxygen starts reducing or lacks. Lacks from below 1 kilometer. Below 1 kilometer. पुनी तळे एमती एरो मार्क देख लेके चलो। बेले बेले कौन कह जाके सुनी दियो, तुम जो तळे तुम ओशियनोग्राफी पढ़ेला बेले जियोग्राफी में पढ़ेबी हैला, तेतरे तुमको कह जाय गोटे तुमरो कह जाय दैट इज योर बेंथिक जोन हैला। बेंथिक जोन माने जेटा कि डार्क जोन कौन कह जाय सेटा मन एटा लिखि नै छल हैला पढ़े से बेंथिक जोन। बेंथिक जोन माने देखो पानी टाइम थी अच्छी, सपोज दिस इज वाटर, ठीक है, दिस इज वाटर। वाटर टा पाखापाखि कह जाए कि 200 मीटर्स पर्यंत तुमर बहुत भल एरिएशन हुए, दैट इज एन कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ योर एयर मॉलिक्यूल्स। सनलाइट भी पड़े, सनलाइट भी पेनिट्रेट करे, मु कहितली थरे सनलाइट भी पेनिट्रेट करे तुमर 200 मीटर पर्यंत। तापर धीरे धीरे 200 मीटर पर धीरे धीरे तुम रेड्यूस करियो, एमति जे एकाधार कर सरी जियो। किंतु आज पर एग्जामिनेशन देखाई छी टिल माने एपट जदि मु नेबी टिल ऊपर 1 किलोमीटर पर्यंत, टिल 1 किलोमीटर पर्यंत एटा कोन हबो हैला
ता परठू माने तार रहे तार मैक्सिमम लिमिट तापर धीरे धीरे कोन हो कमी जियो या तळु को जो जोन टा को आजु आपको आजु तमरो बेंथिक जोन जो धीरे कि तमरो डार्क हला इट इज कंप्लीटली डार्क absence of oxygen molecule हला of course डार्क माने सनलाइट कंप्लीटली सनलाइट पर तम किस दिन तले मु देखुतली गोटे पेपर देथिला सेटा तमरो गोटे ऑक्टोपस वैरायटी अछि सी समुद्र तळे रोज माने कह जो कि सेटा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर मियोसिन और प्लियोसिन से टाइम बहुत पुराना ता एज टा माने नियर अबाउट इट इज नियर अबाउट 600 मिलियन इयर्स को तक हला तुमको मन रहतो कि हाउ ए एनिमल सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन लगुथो ना यस एक्चुअली से माने दे रेस्पिरेट थ्रू डिसॉल्व ऑक्सीजन दे रेस्पिरेट थ्रू डिसॉल्व ऑक्सीजन ठीक अछि पर्टिकुलरली से माने कोन कोन दी फॉर एग्जांपल मुझे कहबी अर्थवर्म जनरली दे यूज लेस ऑक्सीजन अरे माटी भीतर रहंतनी दे हेल्प इन एरिएशन ना माटी को फसफसिया के करे अर्थवर्म करे अर्थवर्म जनरली कंज्यूम लेस ऑक्सीजन हाँ ब्लू अलगे था हमर सुनु हाँ सेठी गोटे क्वेश्चन हे पर जो बड़ जिंस से टॉपिक टा उठेला हला कि जेतले तमरो हला सुन मन देखि जेतले तमरो कहा जाय कि जेतले हमर अर्थ फॉर्मेशन हला अर्थ माने आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स अर्थ फॉर्मेशन हला द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर इज योर ब्लू ग्रीन algae परीक्षा क्वेश्चन यूपीएससी पचारि सच फर्स्ट हला किए तमरो प्रथमे ब्लू ग्रीन algae मन रखो ब्लू ग्रीन algae जोडा केला तमरो हला प्रथमे फॉर्मेशन हेतिला ब्लू ग्रीन algae बुझला प्रथमे ब्लू ग्रीन algae इज कौन which type of cell unicellular सपोज तुमको पचारला फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिला सपोज देखो केमती कि ब्लू ग्रीन algae is considered to be the first organism in our planet comma हैला having it is bicellular structure completely wrong false it is not bicellular it is unicellular question एमती इना पकोचन देखु सुती कमा पकेगी हैला ठीक अछि माने तमे प्रथम अरे मु तुमको आगुरु थरे कोन कहितम गोटे कमा जदी तमे सेंटेंस रे फॉर्मेशन करूचो ता माने इट हैज टू मीनिंग तुम कहितली ता माने कोन हला प्रथम स्टेटमेंट ता करेक्ट हला ब्लू ग्रीन algae सेकंड स्टेटमेंट ता बोल काहे कि एटा बाइसेलुलर नो इट इज यूनिसेलुलर पढ़ीवा सांगर तमर जे मु क्लास रे प्रथम क्लास रे जो माने बेजी नुवा अछम गोटे जे कोजी प्रथमे तमे हला जो माने पुराना छ तो ऑलरेडी जगह पढुछ स्टाइल जान जे कि तुमको आज भी गोटे जिंस कहबी समस्त को जेतले कोन से एग्जाम करूछ डू नॉट बी माने तुमको मु कहूची जहां भी पढुछ सब बळे एग्जाम ओरिएंटेड पढो योर प्रैक्टिकल अप्रोच केमती हे परियो कोन कर परबी एतटा भी इमोशनली इन्वॉल्वड हे जान माने डिटैचमेंट गोटे जिंस रख तुमको कहूची पढियार प्रोसेस कि मते एत्ती की दरकार बे एत्ती की मु पढिबी एत्ती जिंस जानिबी अननेसेसरी मेंचे जिंस जानियो दरकार नै बिकॉज़ योर टाइम इज लिमिटेड कुछ कि नहीं you are entering and appearing such an exam which is gamble अनेसतरु साप खसी की वर्तमान आगुर गोटे साप एक रे छडुला वर्तमान शून्य रे छडुछ लुडू रे हम देखथि सेम थिंग हाईली इंटेलेक्चुअल एग्जाम मन रखो इट्स एन किछ सेम डरियर नै आई एम देयर बट मन रखो स्ट्रेटजी रे जाओ प्रैक्टिकल अप्रोच नियो सब जिंस रे कोन जिंस को हठात किना मेंशन से जानिबा किछि दरकार नै व्हेन यू गेट रिवाइज ऑटोमेटिकली इट कम्स डाउन हला सब बळे भाबो कि मु क्वेश्चन टा केमते सॉल्व करिवि केमते मु प्रीलिम्स रे कहि परि केमते मु मेंस रे लिखि परिवि केमते मु इंटरव्यू दीप पचाले ओरली कर परिवि आई नो मैक्सिमम ओरली बहुत प्रॉब्लम जोटा कि लास्ट फेज रे हुए प्रॉब्लम हला सब बळे निजर माइंड टा को से बळे ट्रेन करो खाली पुळाय पढी जीवा किछि लाभ न से बळे बुझियला नेक्स्ट लेख पुणी पासपोर्ट डाकिनी बोते कूपन डाकिली 1 kilometer below पर्यंत रखी ना पुण लेख बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स ए हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरैक्टिंग जोन बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स हाईली इंटीग्रेटेड
and interacting zone, highly integrated and interacting zone comprising of atmosphere. Sir, repeat. Repeat kuchi, biosphere represents a highly integrated zone, highly integrated and interacting zone. Please underline, highly integrated and interacting zone comprising of atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Actually, it is a narrow layer. Actually, it is a narrow layer around the surface of the earth. Actually, it is a narrow layer around the surface of the earth. It is a narrow layer around the surface of the earth, comma, just like a thick skin of an orange, just like a thick skin of an orange, our biosphere is. Repeat kurche. Actually, it is a narrow layer around the surface of the earth, just like a thick skin of an orange, good orange, comma, our biosphere is. Sir, पूरा starting route क्या उतरा रखूं? Of our biosphere is. है ना? Repeat kurche. Actually, it is a narrow layer around the surface of the earth. ठीक है, narrow layer सारा surface of the earth, comma, just like a thick skin of an orange. अरे कमलार जेमती गोटे तार चोपा थाए सेही भलिया बायोस्फीयर टा हम what I wanted to say. हैला, thick skin of an orange, our biosphere is, comma, our biosphere is IS is. Sir, biosphere represent highly sealed starting route क्या रखूं? Biosphere represents a highly integrated and interacting zone comprising of atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Full stop. Actually, it is a narrow layer. Actually, it is a narrow layer around the surface of the earth, comma, just like a thick skin of an orange, comma, our biosphere is. बहुत बड़ा सेंटेंस को छोटो करके रखी छी, से जो इज मु थोइले है ना, unnecessary. पुन लिखी चलो next. Biosphere is almost absent. Biosphere is almost absent. Biosphere is almost absent at extreme north pole. At extreme north pole, biosphere is extremely, is almost absent at extreme north pole and south poles. And is highest author repeat kala kon likhichi, biosphere is almost absent at extreme of north pole and south pole. No, and is no, and at would continue, and at को जगह रे, and at highest mountains and deepest oceans. माने absent कथा मुझे बुझ को जगह रे, and at highest mountains and deepest ocean due to harsh environment condition. Sir, Harsh environment condition.
कहीं सर ऑक्सीजन लेवल टा कमी जो absence मु डाइवर्सिटी कथा कहूँ को जगह रे तमरो बायोस्फीयर absent जेमति मु कहबी सपोज आई टू टेक एन एग्जांपल ऑफ लद्दाख सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ सियाचिन सेठी अछि extreme condition suppose I take an example of Thar desert suppose I take an example of your Arizona है Mojave desert of USA पढ़ी चंदे हम almost absent किसी नहीं जेटी सेमते है जेमती तापर सेमती कोन लगला ओशियन कंडीशन ओशियन रे भी सेम टाइप्स रो जिंस ओशियन रे भी किछ नहीं डीप ओशियन रे तम लिखछो ना डीप ओशियन सो अंडरलाइन करनियो है तापर लिखो the sporadic occurrence of bacteria and fungi the sporadic occurrence the sporadic माने केतेबेले seldom sporadic माने seldom है ना very few time amane you can say that one sporadic means very few time है ना तब लिखो sporadic occurrence of bacteria fungi sometimes sometimes at height beyond 8000 meter also repeat kochi sporadic occurrence of bacteria and fungi sometimes at height beyond 8000 meter but they are not metabolically active hence represent a dormant life hence Sir, repeat again. sporadic occurrence of bacteria and fungi sometimes at height beyond 8000 meter but they are not metabolically active hence represent a dormant life ठीक है ठीक अच्छे कहीं एटा तुमको एक्सप्लेन कली कि बेले बेले कि ऊपरे माने जेमती टॉप ऑफ द माउंटेन समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन सनलाइट भी पड़े बड़े बड़े सनलाइट पड़ले कोन हो देयर इज अ लाइफ एग्जिस्ट माने सीओली टाइप रो तमरो हला लाइकेन्स फंगी एगुडा सब भी करे से जुगु सेटा कहली कि दो इट इज वेरी मिनिमल बट लाइफ एग्जिस्ट तुमको एटा मो कहबार कारण इट इज नॉट कंप्लीटली एब्सेंट ठीक अछि बिजु जासिस 2 पार्ट 2 समर टाइम इट इज देखा जिवो केते बेले जेतले देखा मु तो आज भी कहबी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर भितरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टा के बेसी पाउची खरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर काहे कि ऑलरेडी अर्थ टा हमर टिल्ट हेच θ1 केते एटी 23.5 डिग्री मु कहितली एमती ऑलरेडी टिल्ट हे कि अछि से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टा रे तमे बेसी पाइबो and that is why glaciers are or icebergs are more prominent in Antarctica and that is why penguins are seen in only southern hemisphere that is to be Antarctica penguins माने के देखाउ छन हैं एटी बा हमर बुल्ली टेकिंग नै जियो संग संग चाइना एमित्रे जाइंगे हम कहितली तुम क्लास रे चाइना एमित्रे पेंगुइन चोरी करछि हां पेंगुइन गणना बतन होछि देखाउ छी यंग पेंगुइन्स गुडा समान गायब हो जाउछ चाइना सीता जहाज लगु छी डाम बा देखु छी बस उठेला पुनी लेला भाजी खाइला त सब तो ताकू भाजी खाइला से बा व्हेल गुडा को चोरी करछि जानछो तमे मैंने पढुतली चाइना ऊपर एलिगेशन अछि तीनटा व्हेल गायब होइछ बड बड व्हेल गुडा नै होछि तांकर सब खाइले खाइला पर मेडिसिन भी बनौछ व्हेल इज वेरी ये ना स्पर्म व्हेल रो पर्टिकुलरली माने क्रोर्स ऑफ रुपीस हम कहते जोमाटो बॉय गोटे बैंगलोर जो धरा पड़ता स्पर्म व्हेल रो वोमिट खाली तार 2.5 कोटी टका से धरी बोलता तार सब जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लागू परफ्यूम्स बढ़िया टाइप रो स्पर्म व्हेल ताको कोन
very expensive. भाव से समुद्र भितर पशिकी माने स्पर्म व्हेल जे बेसिकली तले देखा जानते बहुत डीप माने फ्लोर रे तांको जाएंगे ई कोच तीनटा मार साइलानी साइना एनीवे आसंता कि एते अर्थक्वेक होच अधा पैसिफिक तापटे सेपटू गଳି पडंतानी तळू हैला पूरा 24 टा देश संगे फाइटिंग तार जानछ because China is following the policy of expansionism ने ता ड्रैगन पॉलिसी समस्त संगे झगड़ा सबुठ बेसी हरियाण किए फिलीपींस और ब्रुनेई फिलीपींस रे नंबर 1 ताई फिलीपींस और ताइवान आसंता भी दि चारटा जो भूमिकंप तारी जोड़ा कि कोस्टल पैसिफिक को तुमको जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पढ़ेइतिली हैला अधा सेपट धसी जांदा तळू बुझिनी तुम देखो गोटे जिन मार्क कर कोविड टाइम रे सबु विषय से कथा हला सांघाई विषय किछि कहला नोटिस करछो तमे 2 वर्ष तळर कथा एमति न तुम पूरा मेमोरी भूली गलडी हैला कोविड कथा तुम देखो सबुड सांघाई कथा से बिल्कुल कहना तुम जोड़ा मार्क करथली सांघाई इज द मोस्ट रिचेस्ट तार ये ना सांघाई विषय कौन जानछे व्हाट इज सांघाई सांघाई एसीओ दिल तक गोट थोपी देलु सांघाई विषय कौन जानछे तमे Shanghai is the economic capital of China. Administrative capital की Beijing. जेमती मु कहबी fill in the blanks मत को हैला ठीक अछि जीके which capital of which country data dash is known as the devastating capital of the devastating country. Pyongyang. कोडी Pyongyang कार कैपिटल नॉर्थ कोरिया किछि नै एथरे सबु बैन ए गोटे एमितिया देश एथरे नो एक्सेस नो इंटरनेट नो पब्लिक नो मीडिया नो जर्नल्स समथिंग सबु इनस बन केवल से जो पगड़ा कोन था ना जी खाली फोटो किंग जोंग उन मत लागु से तार क्लोन टा बोलुची सेटा एक्चुअली कोविड रे मरिची आ गोटे 3-4टा बोलुची पागल को जो गला एबे से जो गोटे ट्रेन रे रसिया मॉस्को गला गोटे बुलेट प्रूफ ट्रेन बहुत पूरा एकदम ट्रेन see they are the puppets of China is using China तार जो न्यूक्लियर आर्म्स एंड एम्युनिशन सब तयारी करची आ से बेले बेले साउथ कोरिया संगे घसी की पळौची से ये गोडा जापान ऊपर एमती डेंगी पळौची से that is only to threaten only and he is the puppet of China and Russia both तंगरो रशिया और जापान रो पटी पडुची बिल्कुल भी नो कहबी लागू पढेबी तुम कहबी जापान रशिया रे केमती झगड़ा केते धीरे धीरे ने ट्रिगर होची अगेन सबु देशर जो झगड़ा तुम देखो हिस्ट्री साखी कौन सबु जांक 100 वर्ष तळर तुम भाबनी जो कंट्री रिलेशन तांकर सबु बळे कल्चर एथनिक कल्चर एंड पास्ट रिलेशन को मेंटेन कर हमर से जो वर्ल्ड वार जो पोस्ट जो इराटा वर्तमान जो चलची इट इज ए फेज ऑफ योर हैला कोल्ड वार पर्टिकुलर अच्छा ठीक अछि लास्ट को लेखो सारीवा एटा बायोम लास्ट वन दैट इज योर बायोम I would define likhi chala it connotes to a vast region man indicates to a vast region that share similar climatic conditions. It connotes to a vast region that shares similar climatic condition flora and fauna. Similar climatic condition, flora and fauna. है ना? FAUNA. Flora and fauna. It like generally there are 5 types of biomes.
generally कौन tropical humid forest, then tropical deciduous, ठीक है, tropical humid forest, then tropical deciduous forest. Sir, spelling. Deciduous, Medikoji. Sir, what is the meaning of deciduous? I'll tell you. Just deciduous forest. Kochipura, deciduous forest. Then desert and semi-desert vegetation. Desert and semi-desert vegetation. Desert and semi-desert vegetation. Fourth, coniferous forest. Coniferous forest. Coniferous spelling? Coniferous. Cone ru coniferous. Cone ru, mane conical shape. Coniferous forest. And last one, alpine forest. Alpine. Sir, third one. See, मुझे तो कही भी कि deciduous माने कौन particularly जोटा कि हमें ओडिया रे को पत्र झड़ा एट लिखी नियो deciduous माने plant shed their leaves हला during Winter. autumn or dry season basically हला or dry period. Autumn माने particularly dry period हला ठीक अछि in order to check the moisture loss. पत्र झड़ा दियंती ऑटम माने मोस्टली को टाइम ऑटम माने एई अक्टोबर बेलू को अक्टोबर नवंबर बेलू पत्र झड़ा दियंती काइना मानसून सर जाय था एटमॉस्फेयर में ड्राई था पुणी कोन हुए लिखा इट अगेन द प्लांट्स अगेन रीएमर्ज माने सॉरी द लीव्स अगेन रीएमर्ज इन स्प्रिंग है it again reemerges in spring. ठीक है तो जमती तमे देखियो बहुत सारा शेक्सपियर नोवेल रे सब लिखा हिता है पर्टिकुलरली माने डेसिडियस फॉरेस्ट जमती हमर कोहा जाय एक्चुअली डेसिडियस फॉरेस्ट जमती हमर कोहा जाय मोस्ट ऑफ द मॉनसूनल फॉरेस्ट हमर इंडिया रे माने प्रायली डेसिडियस monsoon कहीं ना इंडिया इज प्राइमली monsoon एरिया इंडिया रे इंडियन जो इंडियन फॉरेस्ट गुडा मेजरली monsoon फॉरेस्ट कहीं ना monsoon हमरो मेनली वी गेट रेनफॉल फ्रॉम योर monsoon हैला बट सेमती एवरग्रीन फॉरेस्ट हम लिखला ट्रॉपिकल एवरग्रीन लिखिछन प्रथम ट्रॉपिकल एवरग्रीन माने एटा सब हम पढेबी ज्योग्राफी पढिबा पुन जे ट्रॉपिकल एवरग्रीन माने चिर हरित अरण्य माने there is माने green leaves are available throughout the year वर्ष तमाम तमरो green leaves तमरो रही हला कोन पे it is because of ample of humidity माने moisture and temperature available हला आज पे तो एतिक रखुछ we'll meet again tomorrow questions देबी पुनी हां yes सर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जोटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी सही सर एग्जैक्टली सेम ट्रॉपिकल एवरग्रीन जोटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी सेम जिंस ग्रीन थ्रू आउट देयर ओडिया ऑप्शनल कथा पचरछो की से who have filled OCS from with language option as ODI for mains or viva okay ठीक अछि ट्रॉपिकल एवरग्रीन टा सर बायोमी रे आसीबनी एवरग्रीन टा बायोमी रे हां आसीबनी काई आसीबनी एवरग्रीन तो बायोम रे आसीबो ना
एवरग्रीन माने ट्रॉपिकल एवरग्रीन सेटा कोच डोंट वरी ज्योग्राफी पढैला बेले तले म पढेबी तमरो क्लाइमेट वेजिटेशन तमरो एटा सरलानी क्लास रे तमरो क्लाइमेट ज्योग्राफी दे क्लाइमेट तम सर्चन हला तेतले पुनी तमरो सर्कल राउंड सर्कल हबो पुनी तमे पढिबो डोंट वरी हला ओके देन थैंक यू ऑल ऑफ यू सर ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट ताले कोटा सर कोई भी सेतबेले ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट सेटा अलगा ह्यूमिडिटी सेटा न थाए ट्रॉपिकल गोटे थाए तमरो मॉइस्ट डेसिडुअस ड्राई डेसिडुअस पढ़ा हबो तमरे इथरे मु एथरे भी पढेबी हला तमरो एनवायरनमेंट रे पढिबो तमे हला फॉरेस्ट बायोसिस्टम रे पढिबो ओके देन थैंक यू ऑल ऑफ यू विल मीट अगेन थैंक यू सर Thank you, sir. रेकॉर्डिंग वीडियो पठेबे कहबे टुमारो इज क्लास देयर हला विल मीट सर थैंक यू